हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में आज पता चलेगा कि हम जो ड्राइंग बनाते हैं या पेंटिंग बनाते हैं उसमें हाईलाइट क्यों ज़रूरी होता है। तो आज की वीडियो में यही जानेंगे कि हाईलाइट ज़रूरी क्यों होता है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ड्राइंग बना लेना है। मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए लिप्स बना रहा हूँ, आप कोई भी ड्राइंग बना सकते हो। ठीक है। Cause we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Yeah, we ran out of patience. Boil up with a cold hard hatred. I can feel the vibration. Feet in the streets, it's a new sensation. I wanna break faces on the pavement. I wanna make greatness look complacent. Adrenaline awakened, I can taste it. We can make an impact, grab and then take it.
फाइनली यहाँ पे ड्राइंग कंप्लीट हो गई है, और ड्राइंग कंप्लीट होने के बाद मैं आपको बताऊँगा कि हाईलाइट में क्या डिफरेंस होता है और विदाउट हाईलाइट में क्या डिफरेंस होता है। देखो, सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि वाइट कलर लेके आपको सिर्फ हाईलाइट करके दिखाऊंगा। ये ओनली वाइट कलर है, आप कोई भी कलर ले सकते। मैं कैमलिन के पेंटिंग कलर यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई भी वाइट कलर यूज़ कर सकते हो, या आपको बस हाईलाइट करना आना चाहिए। आप जो भी रेफरेंस को देख रहे हो उसमें आप सही जगह पे हाईलाइट करोगे तो बेटर रिजल्ट मिलेंगे। अभी आप साफ डिफरेंस देख सकते हो कि हाईलाइट में और विदाउट हाईलाइट में क्या डिफरेंस होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि हाईलाइट कितना इम्पोर्टेंट होता है कोई भी ड्राइंग को रियलिस्टिक बनाने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। लाइक और सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है, वरना हम Ching tabak dum dum.